Just try to recollect what we have discussed in the previous class. So, yesterday we have discussed about hill climbing, okay, local search, and we have found that the necessity of local search, why local search is required, we have tried to find the answer of that, and we were checking that how the local search algorithms have evolved from normal greedy algorithms. Now, hill climbing algorithm is one of the most popular local search algorithm. Idea is very simple, so we have taken a lot of examples and analogy yesterday. We will just continue from there and gradually we'll move to a next important local search algorithm, that is nothing but a modification of over hill climbing, that is simulated annealing. And at the end we will compare between this hill climbing and simulated annealing, and with some real life analogy and some animation we will see that how one is better than the other in complex problem solving. Okay, so basic hill climbing, what we are saying, already we have seen so many cases that local search algorithm hill climbing can come in different varieties, but whatever we are talking about, the simple hill climbing have some limitations, and the limitations we have categorized in 3 different parts. One was the local optima, that means there is always a chance that I will not get a near base solution, because base solution nobody guarantees, but near base solution will not get. So if there is always a chance that we may stuck in a local optima. So this animation can give you a very good idea about this. So from wherever you start, you can climb and you will be sticking to a particular. Now maybe in some cases, if I suppose start from here, then eventually I can come to my optima, which may be the global optima, but that doesn't guarantee it always. So suppose for example, if I take here random some steps, again it is a local optima I will be finding. Suppose if I take from here, so again it is a local optima. So maybe like this, again it is a local optima. So it all depends upon how I am starting. So in most of the cases, it will not give you a local, the near base solution. Only when if randomly I start from here, you can get it. So normal hill climbing will never give you a guaranteed near base solution. So there is the major problem. But wherever my goodness is the solution matters to me, not the best kind of a thing, then this can be a very good solution. But this idea was evolutionary, because most of the rather optimizations or gradually we will be learning are inspired from this very simple concept like hill climbing, and later modifications came over this and gradually we got some more advanced optimization algorithms. But there is a well-known problem like called traveling salesman problem. I think I have discussed in some of the days. Bolo? Blind? দেখো আমি এটা আগের দিনে ডিসকাস কালকে তুমি এসেছিলে, তুমি আসনি বলে বুঝতে পারছো না, probably you missed it. Suppose see, what is the height? Height is nothing but my objective function, a simple function. So my target is to, greater height means what? Higher objective function. Okay, suppose I would like to maximize my profit in investment. So at the time my objective function is the equation which will calculate my profit. Suppose for simple example, for a particular normal, it is a sale price minus the cost price, that is a profit. So your target will be always to maximize this gap. Okay, whatever may be the scenario. So in that case, height means this profit value.
So these function may vary from problem to problem, but my target will be to optimize this fx, this function. So either I can go for maximizing or for minimizing it. Now your question is that blind mean in terms of what? So obviously blind means uninformed, simple baat hai. So when I am talking about hill climbing, so at that time obviously I will not consider the visually blind. So if it is visually blind, then I can consider means my objective is not here vision. My objective here is to altitude, going to my higher altitude. So in that case, I may have any for মানে যুক্তির জন্য I can give any device which can measure its height and tail. But the problem here is that normal simply climbing, the space, whole search space, I cannot visualize at a time. Like that analogy is giving in this way, in a night, in a foggy weather, you are climbing a hill with a headlamp. So that is, headlamp means you have the ability only to search locally, because headlamp se aap zyada dur nahi dekh sakte. So that is where actually these type of algorithms comes in advantage. Okay, and most of the complex problem, yesterday I have also taken an example of mobile phones so that you might missed it. So that type of problems are there. So until and unless you explore, you do not have the idea of the overall whole situation. So real life complex problems are like that only. Okay, so if you have further doubt, you can come to me, I will make you understand. Okay, now traveling salesman problem, I might have discussed one day, if you can remember, that it is an optimization problem where you should know about this problem, because there are some standard problems जिसको example लेके हम सारे algorithms का acceptability, उसका efficiency हम compare करते हैं. So traveling salesman problem is again a well known problem. If you have forgot, I am just briefly repeating this. What does this mean? Traveling salesman, the name is very clear that a salesman is there who will be traveling. So salesman always travels, you know, he is given with some product to sell, he moves from cities to cities and sell that product. Simple, is it? Now what should be the goal here? The goal should be, if the maximum to sell more product, very good. So that is one goal. Another goal, obviously more product sale means more profit. Anything else? Less time, less travel, very good. So that is the thing. So I should select, suppose I am a salesman, my boss has given me some products to sell and he has said me that you will visit, suppose Ukra, Andal, Raniganj, Asansol, Bardhaman, Bankura, suppose these are the cities I am assigned with. Now, how should I start? Because I am an intelligent being, so I am not an so obviously I will have a plan, because my boss has given me suppose 5,000 rupees for traveling purpose, for fuel purpose, suppose. Now being a salesman, my target will be what? कि वहां से जितना हो सके मैं अपना बचा पाऊं. ऑब्वियसली 5,000 से तो ज्यादा मैं नहीं दूंगा तो मेरा ही लॉस हो जाएगा, और साथ में मैं अगर 5,000 से कुछ बचा पाऊं, दैट इज माय प्रॉफिट. सो इन दैट केस व्हाट शुड यू डू? मैं क्या करूंगा तब? आई विल, so whatever it is, in a simple form, I will try to find a very effective route plan such that I can travel all the cities with minimum fuel, minimum traveling. Are you getting it or not? So I have to visit all the cities and also with minimum travel. So that is again an optimization problem. Maximizing the profit, minimizing the path. So this is a very well known optimization problem which we try to solve with the help of various different algorithms. Okay, suppose 10 cities, 12 cities. So this is a very good example you may explore. Because whenever we learn in AI or design analysis of algorithm, whenever we learn any new algorithm, we try to apply that algorithm in TSP problem. That is called traveling salesman problem, and compare their efficiencies. That which is taking the minimum or which is giving you the shortest path one.
Now, how can we correlate TSP problem with hill climbing? So, TSP problem, the objective is minimize the total travel distance. This is my objective. State, a tour, that is a permutation of cities, that is my whole state space. Okay, and neighbor, tours differing by city swaps. Neighbor means what? From here, I can move to either Andal first, then this side, maybe Bakura first. Sometimes. So these two my neighbors, and from when I will moving to the Andal, my neighbors will be running and Jarukra something. So you can understand what I am trying to say. Okay, so start with this. My will be the neighbors, and evaluation will be total distance of two. So that is my evaluation. So I may have permutation, any type of combinations I can achieve. Either I can go to Bardhaman first, then Andal, then Bakura, then Raniganj. Then so this many combinations can be possible. But from those combinations, I have to find out the most key. Shorter one. বুঝতে পারছো? Can you visualize the problem? Because until and unless you can visualize the problem, you cannot get an idea about the solution efficiency. সব কিছুকে মাথায় ঢোকাতে হবে, you have to put in your, just not listen or memorize. Is it a problem or not? Because in being an engineer, we always try to solve the problem of the society. So if any topic, any algorithm, any discussion is not going to contribute to the society, then we are not an engineer. There is a difference between engineer and other scientist or other professions. Engineer always solve problem for the society. So now traveling salesman is a well-known problem. So all the algorithms, all the problems we are discussing, or we will discuss, or we will try to solve through different algorithms, are all related to our society. Getting my point? So hill climbing can be effective here. Start with random tour, then try all possible city swaps, keep swaps that reduces distance most, repeat until no improvement. So if what should be your goal? Once you have learned hill climbing and once you have coded it, the algorithm, then you may apply to your TSP. So TSP, how to formalize the TSP problem? In a computational term, how to formalize, how to represent. So TSP is nothing but a graph. Cities and connections, it is nothing but a graph. So any graph can be represented with the form of a adjacency matrix, you know. And the value of the adjacency matrix can be this cost, edge cost. So once you have formalized it, a adjacency matrix with edge cost, then you can apply it. Are you getting? So once you have done this, now the hill peaks will be the what? The peak of the hill, the highest peak of the hill will be your best solution path, means the path with lowest cost. Okay, and other smaller hills, smaller peaks will be the solution, because here every peak is a solution, because every route is a solution. आप पहुंच सकते हो कहीं ना कहीं रूट से ही आप सारे के सारे सिटी विजिट कर सकते हो. All are solution, but all are not efficient, effective, optimized, lucrative, whatever you say. বুঝা যাচ্ছে? So all peaks, now you visualize, acha, how TSP is like a hill. Because hill climbing is not always that I have to climb the hill. It's not that. Hill climbing means just you have to convert or try to resemble that how the optimization problem can be considered to be a hill. কে বুঝতে পারছো না? Anyone who are not able to understand, tell me. I can give you so many analogies, no problem with that. But it should be very much clear. Until and unless it is clear that how real life problem can be converted to a hill scenario, then what is the need of knowing hill climbing algorithm? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? Any doubt? I'm again asking. No? So I can proceed.
Now in hill climbing, you have found that already these three problems I have discussed, so I am not discussing it again. The plateau, there is a flat, local optima, the lower peaks, and ridge, the narrow, where I have very small space to explore. ठीक है ना? So these are the things. Now these are the problems. You will be saying, sir, this is the problem of a hill. This is the natural problem. So what should we do? But in our solution says also the things can happen. Okay? And researchers are have come to this idea not likely because they have full mathematics, graph, geometric representation. They can show you. I can also show you how the things are coming like that. Now, how to get rid of this? Local maxima, plateau or ridges. Now there may be different approaches. Already कल हमने कुछ बात discuss किए थे. We have discussed some possible solutions. Like whenever you stuck to a local optima, what you should do? You have to sometime descend. Why descend? Because after descending up to some level, I can explore some other part. पहाड़ चढ़ाई के टाइम पे if you stuck to a particular height and you are finding that no way to move, तब आप क्या करोगे? You have to descend and then explore. That means what? Sometime you have to take a move which is not better move as per your objective function, but you have to take that just only to explore the other part of the surface. Okay? Or sometime, so like this I have told you, there are some remedies. One is random reset. So run hill climbing multiple times from different starting point. जो हमने प्रीवियस एग्जांपल दिखा रहा था ना ग्राफ का, तब एक बार एक जगह से हम स्टार्ट कर रहे थे. So it is saying one of the solution. You just run the algorithm for 10 times. So obviously now compare with the 10 solution. Each and every time you will get a pick, take the best of them. So that can be a better move. एक बार लिया चांस और एक बार लोकल जगह पे अटक गया, उससे ज्यादा अच्छा 10 बार ट्राई करो और 10 में से अच्छा जो है you just select that. Okay? So that is it is saying about random restart. Start, check solution, restart. Start, check solution, restart. Keep the score, keep the value, and then compare at the end. But how many random moves you will take? That is your decision. Because too many moves, too many iteration. That means more time, more memory. So you cannot run an algorithm and check. Got my point? If suppose ये जो है if I click this 1000 times, तो उनमें से there is a chance one time it will give you the best solution. But to get a solution, will you wait for 1000 runs? So obviously that is not effective. Are you getting what I am saying? So random start, but I can at least try for 5, 6, 10, how much I am able to do it. Now sideway moves, allow moves to state with same value, that is plateau. Sideway means what? Earlier normal greedy was taking only the better moves, that is the higher elevation. But I was not talking about any similar level moves. Similar level means plateau. So if I am not getting any better step, whatever the region I am getting, all are having the same height. So that doesn't mean, that means what? That means I have reached to a plateau region, but plateau में भी चल सकते हैं हम. Maybe you move to plateau region after some time. Suppose 10 steps, 20 steps. Maybe after that you will be again getting a higher elevation steps. लेकिन हम नॉर्मल सिंपल हिल क्लाइंबिंग में क्या करते हैं? मैं 2 स्टेप, एक स्टेप लिया,
फिर मेरे पास नेबर 4 स्टेप है और चारों की चार ही सेम वैल्यू है, सो मैं बता दिया आई एम नॉट गेटिंग एनी हायर एलिवेशन, सो स्टॉप, आई हैव डन. सो दिस इज सेइंग साइडवे मूव्स इज सेइंग नो, उतने जल्दी आप खत्म मत करो अपना सर्च. अगर आपको सेम वैल्यू मिल रहा है तब कुछ हद तक आप स्टेट चेंज करो. अगर आफ्टर इवन सम इटरेशंस यू आर नॉट गेटिंग एनी बेटर मूव, देन यू मे स्टॉप. सो नॉट एट द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो व्हाट इज साइडवे मूव्स? लार्ज नेबर्स, नेबरहुड्स, कंसीडर मोर डिस्टेंट नेबर्स, नॉट जस्ट इमीडिएट. सिंपल हिल क्लाइंबिंग में हम क्या करते हैं, अगर यहां से मुझे 4 जगह जाना है, 4 नेक्स्ट नोड है, सो आई विल ऑलवेज गो फॉर हायर. सो देखो मैं सिंपल हिल क्लाइंबिंग का सपोज ये मेरा करंट स्टेट है, ओके. इवैल सी मींस द ऑब्जेक्टिव वैल्यू ऑफ दिस करंट स्टेट, जिससे उसका मैं वैल्यू चेक करूंगा, ओके. नाउ फ्रॉम हियर सपोज आई कैन मूव टू सपोज n1, n2, n3, n4, okay. Now for each and every node you will be having a eval function. So this is eval n1, eval n2, eval n3 and eval suppose n4. What is eval? Eval is a function which will evaluate your fitness of the node, means attractive of the node, मतलब height. अगर मैं हिल क्लाइंबिंग के साथ बात करूं तो हाइट, तो करेंट नोड का हाइट अगर सपोज मानो 10 मीटर है और सपोज n1 का ये इवैल सपोज है 10 मीटर, ये सपोज मानो इट इज 9, इट इज सपोज 12, इट इज सपोज 10 और इट इज सपोज 15, ओके. तो सिंपल हिल क्लाइंबिंग विल डू व्हाट, अगर इस तरह से करता है तो इट विल चेक 9. सो 9 इज अ डाउन हिल. मैं 10 मीटर की ऊंचाई पे हूं और मुझे 9 मीटर वाला पाथ मिल रहा है, सो मैं ऑब्वियसली वहां नहीं जाऊंगा. नेक्स्ट आई विल चेक जिसका हाइट 12 मीटर है, सो मेरा प्रेजेंट स्टेट से बेटर है, सो आई विल मूव. आई विल नॉट एक्सप्लोर दिस. दिस इज व्हाट सिंपल हिल क्लाइंबिंग. फर्स्ट जो मुझे बेटर मिलेगा मैं उसमें चला जाऊंगा. आई एम क्लियर व्हाट आई एम सेइंग. और रैंडम बता रहे हैं कि एक बार 12 मिला आपको, ओके, स्टोर करके रखो, दोबारा स्टार्ट करो, तब शायद आप ये वाला नोट पहले चेक करोगे. एक बार आपने यहां से चेक किया, फिर में भी आप यहां से चेक करोगे, तब इधर से जब देखोगे 15 मिलेगा, वो भी स्टोर करो. फिर एक बार ट्राई करो, आप यहां से स्टार्ट किए तो आपको 12 मिला, यहां से 10 मिला, तो आप 5 बार में आपको 5 वैल्यू मिला. आप कंपेयर करो उनमें से बेटर कौन सा है. सो इन दैट केस यू कैन गेट इट. गॉट माय पॉइंट? बट इफ आई हैव so many nodes, that's problem. But plateau region is saying what? Plateau is saying that suppose if all of them are having same value, all of them are 10, that is a plateau. Are you getting? So I am not getting any better move to go forward. So in that case it is advised that okay, no problem, you move, at least take a move, क्योंकि यहां से भी जाके तो आपको और भी कोई मूव्स मिलेंगे. Maybe further states will give you a better solution. কি বিশাল বোঝা যাচ্ছে? Is it clear or not? Okay. So larger neighbor means consider more distant neighbors, not just immediate one. Now for taking the value, it is saying that okay, you also consider these neighbor also. This is your immediate neighbor, but you also consider these neighbors. So immediate neighbor ये है और ये immediate नहीं है लेकिन neighbor तो है, एक स्टेप दूर है. समझ में आ रहा है? So these are possible remedies
but all remedies will be requiring increasing the complexity of your algorithm. So obviously there is always a what? Decision or choice. So what do you think? So these remedies should not be used or are not used? No. Whenever people are thinking about remedies, they are thinking something new. रेमिडीज मतलब क्या, प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको मिल रहा है, दिख रहा है, तो क्या किया उसने बाद में, उन्होंने उसको मॉडिफाई करके और एक एल्गोरिथम बना दिया. समझ में आया व्हाट आई एम सेइंग? सो दिस इज हाउ द थिंग प्रोग्रेस. Now, one thing is very clear, that through hill climbing, if we try to get a better solution, few things needed to be done. One is, we should allow what? Randomness or random moves. Means not always go for better. Sometime ऐसे ही try करो, then should allow the moves which are not better sometimes. Is it or not? This is better sometimes, है ना? अगर कुछ टाइम पे मैं वर्स मूव लेता हूं, then it will help me to explore what? More area of that my search space. Okay? But another thing is there. So these two general consideration I got. Okay? Now you tell me the thing that being a climber, the story I was saying, जो मैं वो स्टोरी बोल रहा था ना, एक क्लाइंबर रात में हेडलैम्प लेके क्या हुआ है, चढ़ाई पे खड़ा हुआ है, हिमालय के हाईएस्ट पीक पे चढ़ेंगे. ठीक है, अब उनको मैंने बोल दिया कि अगर वो सपोज एक एक्सपीरियंस क्लाइंबर है, तो वो क्या करेगा, शुरू में वो ज्यादा एक्सप्लोर करेगा, कभी चढ़ेगा कभी उतरेगा, उधर देखेगा इधर देखेगा, जाएगा. क्यों? क्योंकि शुरू में उसका एनर्जी ज्यादा है, और अगर जितना नीचे की तरफ रहेगा ना, उतना उसका फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा है, क्योंकि हिल के जितने ऊपर चढ़ते जाएंगे उसका चेंज करने का, लोकेशन चेंज करने का एबिलिटी कम हो जाएगा. समझो ना, विजुअलाइज कर सकते हो आप. जब जितना हम नीचे की तरफ रहेंगे तो इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन जितना ऊंचा जाएंगे तो इधर उधर जाना और भी कम होता जाएगा. ये है कि नहीं है? प्रैक्टिकली है कि नहीं है? है. और भी एक बात ज्यादा, अगर है भी, उसका एनर्जी कब ज्यादा रहेगा, जब वो शुरू में है. अगर कुछ दूर चढ़ गया तो उसमें थकान आ जाएगा, टायर्डनेस आ जाएगा, तब वो चाहे भी, तब भी वो ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा. तो एक्सप्लोर अगर करना है तो शुरू में करो. Are you getting what I'm saying? और जितना ऊपर चढ़ो उतना आपका एक्सप्लोरेशन का जो चांस है, एक्सप्लोरेशन का चांस कम होते जाएगा. तो उसको अगर हम और भी थोड़ा फॉर्मलाइज करें, क्यों यू रैंडम मूव्स आर अवेलेबल. देखो मैं लिख रहा हूं, मैं उसको ये लॉजिक, रैंडम moves
are available only when your energy is what? High. Your energy is high energy. जैसे अभी कुछ कुछ स्टूडेंट को नींद आ रहा है, एनर्जी लेवल बहुत कम है, ठीक है ना, तो थोड़ा चांस अगर दे दे, अभी कुछ नहीं करे चलाएगा, नहीं कर पाएगा, लेकिन शाम को आप लोगों का एनर्जी ज्यादा हो जाता है। शाम के टाइम, सुबह तो एकदम एनर्जी कम, बाजार जाओ नहीं होगा, कॉलेज सोचेंगे, लेकिन शाम में ना एकदम पूरा रेडी। कहाँ जाना है बोलो? मेराचिती जंक्शन, इधर उधर कहीं भी चले जाएंगे। So your energy, if I consider at that time your energy is very high, so exploration ज्यादा आप तब कर पाओगे, ठीक है। और एक चीज तो है, जितने ऊपर जाओगे तो एनर्जी घटेगा। So एक thing is random moves are available only when your energy is high, and now when your energy is high, you will explode. Now when you will explode, you will face both the situations. Both means sometime you will be getting better moves, sometime you are getting worse move. सही है या गलत है? जब आप एक्सप्लोर करोगे ज्यादा, एक्सप्लोर मतलब एक बार चढ़ोगे एक बार उतरोगे, तब आपको कभी कभी आपको ज्यादा मिलेगा, हायर सोल्यूशन मिलेगा, कभी कभी आपको कम मिलेगा। तो उस टाइम पे आप एक चीज मुझे बताओ, सोच के बताओ, कब आप ज्यादा ऊंचाई वाला स्टेप लोगे, बेटर सोल्यूशन की तरफ जाओगे, कब आप डिसेंड करोगे, ये आप कैसे सोचोगे, कैसे डिसाइड करोगे? आपका सिचुएशन, मानो आपके पास सिर्फ हेडलैम्प है, आप ज्यादा दूर नहीं देख सकते हो, और आपका मोटिव क्या है? बहुत दूर चढ़ गए बाब, अब नीचे उतरे, या फिर ऊपर जाना है। कौन सा? ऊपर जाना है। दिस इज योर गोल। सो ऊपर अगर जाना है, दैट मीन्स योर क्लाइंबिंग प्रॉब्लम। बट अगेन द सेम प्रॉब्लम इफ यू रिवर्स, आपको किसी भी पहाड़ का ऊंची चोटी पे छोड़ दिया गया है, आपको नीचे उतरना है, सो दैट इज द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। सेम मैं कल बता रहा था ना, मैक्सिमाइजेशन इज नथिंग बट अ माइनस ऑफ मिनिमाइजेशन। सो सेम। तो मेरा कहने का मकसद है, हाउ और व्हाट विल वर्क इन योर माइंड कि मुझे कभी बेटर सोल्यूशन दिख रहा है, कभी वर्स सोल्यूशन दिख रहा है, और मेरा गोल है चढ़ना, तो मैं क्या करूंगा? मुझे एक्सप्लोर भी करना है, तो मेरा इंटेंशन वहां पर स्ट्रेटेजी क्या होगा बोलो तो? अगर ये बता दोगे तो आप नेक्स्ट वाला एल्गोरिथम समझ जाओगे। मैं और भी ब्रेक करूं तो बता दोगे प्रॉब्लम को। क्या करोगे आप? व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी? क्या आप जब भी, मतलब मैंने कहना हर वक्त क्या जब ऊंचा मिलेगा तब चढ़ोगे, या फिर जब भी आपको नीचे वाला मूव देखेगा डाउन हिल उसको ले लोगे? कैसे कैसे आप लोगे? क्योंकि आपको हर एक स्टेप में कभी बेटर मूव मिलेगा, डाउन हिल मूव मिलेगा। हर टाइम पे हायर लोगे तो एक्सप्लोर कैसे कर रहे हो? हर टाइम पे लोअर लोगे तो अब तो चढ़ नहीं पाओगे। रैंडम मूव अगर लोगे आप, पूरा रैंडम हो, तो आपका एनर्जी जाएगा, क्योंकि आपके पास कोई गोल नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। रैंडम मतलब क्या? रैंडम मतलब टॉस। हेड आता है तो ऊंचा जाऊंगा, टेल आता है तो नीचे जाऊंगा, तो हर बार आप टॉस कर रहे हो, तो मतलब आप पहुंच भी सकते हो नहीं। दिस इज कॉल्ड रैंडम। क्या हो सकता है स्ट्रेटेजी बोलो तो? हाँ, एक बार ऊपर एक बार नीचे करोगे तो नॉर्मल सेम जगह पे रह जाओगे, ठीक है। और उसको एक्सटेंड करो, आप नजदीक जा रहे हो। বলো বলো, অনেকটা যাচ্ছ, ইউ আর থিঙ্কিং উই আর গোয়িং নিয়ার। তুমি হলে কি করতে? নিজেকে ভাবো না, ইউ থিঙ্ক ইউরসেলফ।
এখন চড়তে বলছি না রিয়েলে, ভেবো না, আমি ভাবতে বলছি আর কি, তোমরা পাহাড়ে চাপছো। কি হওয়া উচিত? প্রথম দিকে তোমার কাছে এনার্জি আছে, তাই এনার্জিটিকে তোমাকে খুব কেয়ারফুলি খরচা করতে হবে, তাই না? Whenever you are having higher energy, that means your target is to explore. So in exploration, you cannot just waste your energy. Random लोगे, you are wasting it because you are not guaranteeing. डाउनहिल लोगे तब भी आप वेस्ट कर रहे हो एनर्जी, क्योंकि फाइनली तो आपको ऊपर चढ़ना है। सो क्या है एक्सप्लोर, ऐसे क्या फॉलो करने से मेरा एक्सप्लोरेशन भी होगा और मैं, बोलो ना, बोलो बोलो। Good, অনেকটা গেছো, you are nearer and almost it is something like that. See, when my energy is high, I will explore, and after climbing some distance, I will take some downhill move to explore further. Some, so if I take suppose 100 up step, maybe 10 to 20 down step I will take. Getting my time what I'm saying? Now इसका और भी एक एनालॉजी ले लेते हैं, जैसे आप बताए भी वो भी है, ऊपर जितना चढ़ोगे ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा, तो आपका एनर्जी लॉस होगा, ठंडा भी ज्यादा लगेगा ना, तो जितना ठंड पड़ेगा आपके शरीर में गर्मी कम हो जाएगा और आप एक्सप्लोरेशन में नहीं कर पाते। तो एक्सप्लोर करने के लिए आपको नीचे आना है, नीचे आपको एनर्जी मिलेगा, तो हायर एनर्जी में आप क्या करोगे? एक्सप्लोर करोगे, और लोअर एनर्जी में आप सिर्फ क्लाइंब करोगे। आर यू गेटिंग इट और नॉट? Is it matching or not? So whenever there is a higher energy, you will be moving randomly, and whenever you are having lower energy, तो आप you will only climb, मतलब आपका मूवमेंट कम होता जाएगा। मूवमेंट कब कम होता जाएगा? जब आप ऊपर चढ़ोगे। आप मानो ऐसा कौन सा फिजिक्स सिचुएशन मानो आप फिजिक्स में थोड़ा आ जाते हैं कि हायर एनर्जी में पार्टिकल्स का मूवमेंट रैंडम होता है कि नहीं होता है? जब हीट ज्यादा होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, किसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट ज्यादा होता है? उसके बाद और सबसे कम, पता है सबको, ठीक है ना? तो अगर मुझे कुछ लिक्विड में कुछ मेटल का स्ट्रक्चर बनाना है, मूर्ति बनाना है, मूर्ति, तो मैं सॉलिड मेटल लेके काम करूंगा या लिक्विड मेटल लेकर काम करूंगा? हाँ, लिक्विड मेटल। क्यों? यू कैन गिव इट अ शेप। सो अगर उसमें क्या बोलते हैं उसको, छाछ जेटाके बोली, ढांचा, हाँ। सो इफ आई हैव अ कास्ट, सो इफ आई पोर अ व्हाट मेटल, लिक्विड मेटल, सो इट ऑटोमेटिकली टेक्स इट्स पोजीशन टू एवरी कॉर्नर। तो अगर तुरंत वो कुछ देर जाने के बाद गर्म ठंड हो जाएगा तो क्या होगा? वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तब मुझे क्या करना है? फिर से मेल्ट करना है। समझने की कोशिश करें, मेरे पास एक ढांचा है, उसमें धीरे धीरे मेटल डाल रहा हूं, तो मेटल ठंड भी तो हो जाता है, तो कुछ देर डालने का ठंड हो गया, पूरा स्ट्रक्चर नहीं मिला, तब मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको दोबारा हीट करना पड़ेगा, तो फिर से वो फैलेगा। तो ऐसे हीट किया, ठंडा किया, हीट किया, ठंडा किया। और कूलिंग अगर तुरंत हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम होगा? स्ट्रक्चर विल बी लॉस्ट, तुरंत जम जाएगा, शेप नहीं मिलेगा। अरे गेटिंग इट और नॉट? सो अच्छा मूर्ति बनाने का कंसेप्ट क्या है? उसको जब गर्म रहेगा, लिक्विड होगा, तब उसको ढालो, क्योंकि तब उसमें मूवमेंट ज्यादा होता है, रैंडमनेस ज्यादा होता है। हंसो मत, सुनो। और उसको सारे कोना मिलता है, और ठंड भी धीरे 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 करो ठंड। क्यों? ज्यादा जल्दी कूलिंग कर दोगे तो बेस्ट शेप नहीं मिलेगा। ये जो मेटल का मैंने बताया ना, मेटलर्जी में इसको बोलते क्या है? एनेलिंग बोलता है इसको। मेटलर्जी में इस टेक्निक को बोलता है एनेलिंग, ठीक है? अब इस एनेलिंग को अब जैसे आपने बताया उसको हिल क्लाइंबिंग के साथ कंपेयर करो। मेरा जब एनर्जी ज्यादा है तब मैं क्या कर रहा हूं? ज्यादा मूव ले रहा हूं, एक्सप्लोर कर रहा हूं। क्यों? तब मेरे पास एनर्जी ज्यादा है। जब मैं
लेकिन कूलिंग भी करना है, बिना कूलिंग किए मैं तो ऊपर चढ़ नहीं सकता। तो जो कूलिंग मतलब ऊपर चढ़ना, धीरे धीरे चढ़ो। शुरू में सर्चिंग का इनिशियल स्टेज में आप एक्सप्लोर करो, क्योंकि आप एनर्जी ज्यादा है, यू कैन टेक रैंडम मूव्स। अच्छा भी मूव ले सकते हो, बुरा मूव भी ले सकते हो, लेकिन अच्छा लोगे या बुरा लोगे ये आपको एक डिसीजन लेना है। जब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, उनमें से मुझे कोई एक लेना है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं? प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं ना। एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है टू चेक टेक इट। सो माय मूव विल बी प्रोबेबिलिस्टिक, whether I will climb or descend, that move will be probabilistic or stochastic in nature based on a probability। अब उसका probability का कैलकुलेशन कैसे होगा, उसके लिए एक फंक्शन होना है, सिंपल बात है। तो मतलब शुरू में मैं अपना एनर्जी ज्यादा है तो मैं एक्सप्लोर करूंगा, फिर टाइम में धीरे धीरे कूलिंग करूंगा। जब कूलिंग करेंगे तब मेरा एक्सप्लोरेशन घटता जाएगा। कुछ देर बाद जितना मैं ऊपर चढ़ूंगा मेरा चढ़ाई ज्यादा होगा, एक्सप्लोरेशन कम होगा, चढ़ाई ज्यादा होगा, एक्सप्लोरेशन कम होगा। कुछ देर बाद मेरे पास सिर्फ चढ़ाई ही होंगे, कुछ भी एक्सप्लोरेशन है डाउनहिल मूव नहीं होंगे। तो फाइनली में क्या होगा, ये अप्लाई करने से अच्छा मेटल का मूर्ति बनता है। तो सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करने से मेरा अच्छा सोल्यूशन भी मिलता है। तो जैसे कि मैं इस एनेलिंग मैकेनिज्म को मैं अपना कंप्यूटर एल्गोरिथम में सर्चिंग में सिमुलेट कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं। सो दिस एल्गोरिथम इज नोन एज सिमुलेटेड एनेलिंग। व्हाट माय पॉइंट? सो सिमुलेटेड एनेलिंग क्या है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो अभी ने सोल्यूशन बताया क्या करना है। फिर रिसर्चर ने देखा कि इस तरह का मेथड तो यूज होता है मेटलर्जी में, तो उसको आप सिमुलेट कर दो। अब वो कैसे करना है, वो जो प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करना है, कब ऊंचा जाना है, टेम्परेचर क्या है, क्योंकि टेम्परेचर तो मेटल के समझ सकता हूं, डिग्री सेंटीग्रेड में ले आया था, लेकिन हिल क्लाइंबिंग में या जीएसपी में टेम्परेचर क्या है, एनर्जी क्या है। एनर्जी तो मैं यहां पर बोल रहा हूं मेटल का हीट एनर्जी, लेकिन इसमें हीट एनर्जी कहां है? तो सिमुलेट मतलब क्या, इसका कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन मैं यहां बनाऊंगा। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। एनी डाउट? सो हिल क्लाइंबिंग से कैसे सिमुलेटेड एनेलिंग आया पता चला? अब सिमुलेटेड एनेलिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव एल्गोरिथम यूज्ड टू बी, एंड उसका एक सैंपल अगर रैंडम मैं आपको अटेंडेंस लेते लेते बताऊं, किसका क्लास है अभी? हैं? ओके, मैं आई विल शो यू द रिजल्ट, क्या एडवांटेज है, फिर मैं क्या होगा। हाँ, कल मैं इसका मैथमेटिक्स पार्ट डिस्कस करूंगा तो और भी क्लियर होगा। लेकिन एक चीज देखो, ये हिल क्लाइंबिंग है, कल नहीं मतलब नेक्स्ट क्लास। सो ऑब्वियसली दोनों में ही एक ही ग्राफ है, समझ में आया? दोनों में ही एक ही ग्राफ है, और यू कैन फाइंड दैट दिस इज माय ऑप्टिमम सॉल्यूशन बोथ द केसेस ना। एक में मैं सिंपल हिल क्लाइंबिंग अप्लाई करूंगा, दूसरे में मैं सिमुलेटेड एनेलिंग अप्लाई करूंगा। नाउ यू विल फाइंड थ्रू दिस एनिमेशन, फर्स्ट अप इसको देखो, इसको अगर रन करूंगा तो ये 0 से स्टार्ट हुआ, यहां खत्म हो गया। थोड़ा ज्यादा बेटर है लेकिन ज्यादा नहीं। उसको और भी एक बार रिसेट करके रन कराओगे तो थोड़ा दूर चला। देखो मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम उसको पोजीशन 8.8 में मिला, वैल्यू मिला 6.65, लेकिन मुझे पता है वैल्यू है 60 के ऊपर। और भी चलाओ तो कुछ जगह पे एक दो बार उसको अच्छा मिल रहा है। फिर से अगर आप रिसेट करोगे, अब भी उसको 73 की तरफ वैल्यू मिला। अब देखो कम मिला, देख रहे हो? तो कभी मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, कभी मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है। लेकिन इफ यू गो फॉर सिमुलेटेड एनेलिंग, इट नॉर्मली शुरू में बहुत कम जगह होगा,
शुरू में जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली इट विल रीच टू द हाइट. But one thing is sure that it is taking time to get optimized. But नियर 73 में आ गया. और भी दोबारा ट्राई करो. आपको अगर लगता है तो अचानक हो गया, तो देखो कितना नीचे से स्टार्ट किया रैंडमली. अब ये एक्सप्लोर कर रहा है. मे बी और मे नॉट बी, बट देयर इज अ हाई चांस इट विल गेट. ये ज्यादा एक्सप्लोर इसको नहीं कर पाया क्योंकि बहुत नीचे शुरू हुआ. दोबारा ट्राई करो. Now see, it has got the optimum one. Are you getting? So if you take, दोनों को अगर आप रिस्टार्ट करो और एक साथ चलाओ एक ही रैंडम वैल्यू से, अब इसके पैरामीटर भी आप ट्यूनिंग कर सकते हो. इसमें ज्यादा टाइम ले रहे हैं. दोनों ही ऑलमोस्ट मैक्सिमम में आ गया. ना इस सिचुएशन में देखो, यहां पर फेल किया इन्होंने, मे बी. सो इफ यू टेक ऑलमोस्ट 100 रैंडम ना, तो अब देखोगे उनमें से 90 में सिमुलेटेड एनालिंग इज मूविंग अहेड मोस्ट ऑफ द केसेस. सो बहुत सारे गेम्स सिमुलेटेड एनालिंग से बनता था पहले. हाँ, शॉर्ट में सिमुलेटेड एनालिंग क्या है? एनालिंग इज अ मेटलर्जिकल प्रोसेस वेयर actually it is said that to give shape to a metallic structure, the randomness is allowed whenever it is hot in liquid state, and then it is gradually cooled to give it a shape. So whenever the same strategy you are doing, so whenever in the initial phase of your searching, you can take random moves. Random moves, even rather you will take moves with probability. You will take good moves, but sometime you will also take bad moves. These bad moves will help you to explore the search space, and the probability of taking bad moves will be high whenever your energy is high, and whenever your energy is low, low means whenever you are going towards the solution, you are taking the bad moves or worse move, probability will decrease. Randomness with probability, probability matlab probability, stochastic, not random, stochastic. But again, stochastic nature, which there is a called energy function, I will discuss tomorrow, that energy is very important to calculate, because energy से randomness, energy ज़्यादा randomness ज़्यादा, energy कम randomness कम. Okay, Abhishek, चलो.